Hello students, today we will study chapter number 15, Government. It is a chapter of civics. Elders do the administration and management of home. एल्डर्स जैसे हमारे घर को चलाते और मैनेज करते हैं, वैसे ही हमारी कंट्री को गवर्नमेंट मैनेज करती है. Similarly, the administration of our country is done by the government. Now let's study the types of government. Democratic, communist and monarchy. Democratic government. Democracy means of the people, for the people, by the people. Of the people means लोगों की government. In democratic government, people play an important role. Government functions keeping the public in the center. For the people means लोगों के लिए. Democracy works for the upliftment of living standard and well-being of people. Democratic government लोगों के well-being और living standard को improve करने का काम करती है. The government makes plans and schemes to ensure equality, security and convenience to everybody. By the people means जनता से ही बनाई गई government. In this system, people elect their representative through voting. इस सिस्टम में पीपल को राइट है कि वोटिंग के थ्रू अपने लीडर को सिलेक्ट कर सकते हैं. It is said for democracy that government is run by the people directly or indirectly. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो पब्लिक पे ही डिपेंडेंट है. The time period of elected government in our country is 5 years. There are two types of democratic government, parliamentary and presidential. In India, there is parliamentary democracy. In parliamentary system, main role is of the prime minister, and in presidential, main role is of the president. Government is necessary at various levels. There is local government which takes the charge of village or city. State government which takes the charge of entire state. Central government which take the charge of entire nation. Local government, state government and central government are formed through the election. Now we will study communist government. Communist government, the government working on the basis of communism. जो गवर्नमेंट कम्युनिटी की बेसिस पर वर्क करती है उसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं. इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी एंड सिमिलैरिटी इज गिवन टू ऑल. कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में सबको इक्वालिटी और सिमिलैरिटी दी जाती है. The administration is done considering economically, ideological and intellectual equality among workers, laborers and exploited people. Communist ideology is known in the world as leftist ideology or Daberi ideology. Now let's know about monarchy. Monarchy or dictatorship. In this type of government, any one person rules as a ruler. Generally, the title of ruler is inherited. इस गवर्नमेंट में कोई भी एक पर्सन ही लीडर होता है और वो लीडरशिप हेरिडिटी मीन्स विरासत से मिलती है. पीपल डू नॉट हैव राइट टू चूज देयर रूलर. पब्लिक को अपना लीडर सेलेक्ट करने का राइट नहीं होता. एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन वेलबींग ऑफ रूलर rather than पीपल्स. Now let's study about government and its laws. The picture you can see on the screen is the goddess of justice. Framing of laws is the work of government. Government का work है laws बनाना means rules prepare करना. Government has power to amend laws along with their implementation.
और गवर्नमेंट के पास उस लॉज को इम्प्लीमेंट करने का पावर है। पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट लॉज, लेकिन पब्लिक उस लॉ को बदल सकते हैं। पीपल कैन सीक कोऑपरेशन ऑफ कोर्ट्स फॉर द राइट्स एंड अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू देम। पीपल को अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ और राइट्स के लिए कोर्ट से सहयोग मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।